Namaskar, my name is Gajendra Sharma and you are watching English. I'm live again and we are continuing with this lecture series, particularly MCQ series on literary terms and figure of speeches. So daily we take 4 or 5 questions and then we explain all the options of these questions and describing them in detail and managing other points also which are important from the examination point of view. So let's start the series. This is part 5 and if you are new to the channel, so I request you to subscribe to the channel so that you may not miss all these such classes and you are also expected to share it and like it, share it among the students who are very means very sincere in their preparation. So let's continue with this live session today. The very first question is the major character who stands directly opposed to the protagonist. Actually, in any story, there are some kind of characters. Some are major characters, some are minor characters. Among the major characters, the central character, the focal point of the entire story, is known as protagonist. Protagonist can be a villain. Protagonist can be a hero. It is not means you don't have to confuse with the protagonist to be a hero. It is not necessary. Actually, if the villain, the movie or the story is villain centric, so the villain can be the protagonist. However, in most of the cases, protagonist is the hero, and he is countered by some other character. So, what is that other character who counters the protagonist? So, is it anti-hero, villain, or antagonist, or foil? So, it is clear that since we are talking about protagonist, so the opposite of protagonist would be antagonist. The correct answer is antagonist. Antagonist is the second senior or second not senior, the second important character who is in the direct contrast to the villain. Not villain, the protagonist. It may be hero or it may be the character of good win, good virtue. So the character who stands in the stature, stands in quality, stands in courage, stands in power, stands in popularity as the same as the main character, the protagonist. So the protagonist is mainly countered by the antagonist, or antagonist is mainly countered by the protagonist. If we take the other characters, anti-hero is a kind of character who does not have the heroic quality or who does not reflect the heroic quality in the story, or who stands quite in the contrast of the hero. मतलब we can call it villain. विलन भी आपका हो सकता है वो एंटी हीरो. और जनरली एक दूसरा कॉन्सेप्ट भी एंटी हीरो का जो हीरोइज्म शो करते हैं, बट दे टेक हीरोइज्म टू द डिफरेंट सेंस, मींस द ऑपोजिट सेंस. तो वो इस तरह के कैरेक्टर्स होते हैं जैसे कि नॉर्मली हीरोइक होते हुए भी हीरोइक नहीं होते. मतलब द मेन डिफरेंस बिटवीन अ हीरो एंड द एंटी हीरो. Hero uses all his capability, all his heroism, all his quality for the good intention, and anti-hero uses every skill or his quality for the bad purpose, for the wrong purpose. So anti-hero, villain, and the foil, the other character is a foil kind of character, is a direct means he is also very capable of showing valor, showing courage, showing quality as compared to the main character. And sometimes he steals the show. The foil character takes the due credit of the audience. We
focus, we are expected to focus on the protagonist. However, the side hero takes the attention. So whenever the side hero, who can be the friend of the main character, who can be any other character in the story who has substantial important part in the development of the action, तो वो कौन सा वो कैरेक्टर जो कि साइड मतलब दूसरे कैरेक्टर का पूरा क्रेडिट पूरी अटेंशन ले जाए, सो दैट इज अ फॉइल टू द कैरेक्टर, जस्ट लाइक होरेशियो इज द फॉइल टू द कैरेक्टर टू हैमलेट. Banquo is a foil to Macbeth. So Banquo या Macduff, they are equally important characters, and then they are equally means courageous, equally powerful, equally devoted to the king, and equally magnificent in their popularity or in their valor, in their courage. तो मैकबेथ की जो अटेंशन लेनी चाहिए थी वो समटाइम्स आवर sympathy or our attention is to that character. So these character prove to be the foil to the main character. ऐसे बहुत सारे मूवीज में होते हैं कि हमारा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन जो मेन कैरेक्टर होना चाहिए था उसकी जगह कोई साइड हीरो ही सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हो जाता है. सो दैट साइड हीरो और साइड कैरेक्टर हु टेक्स द ड्यू अटेंशन, वो कौन सा होता है? फॉइल टू द कैरेक्टर, ये फॉइल कैरेक्टर उसको हम कहते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. It is a rhetorical device in which a word or a phrase is repeatedly used but in different senses. The meaning changes every time. It is common type of pun. For example, our argument is sound, nothing but sound. Now we are dealing with a kind of figure of speech or literary device where we repeat the same word in different places, same word at different places. एक इसको पन में और इसमें आपको जो भी इसका आंसर होगा, पन में एक्चुअली हम क्या करते हैं, वी यूज द सेम वर्ड, मतलब वी यूज द सेम वर्ड एट वन प्लेस ओनली, बट वी हैव टू डिफरेंट मीनिंग्स. सो डबल मीनिंग की बात करते हैं हम पन से. The single word has two different meanings. If we interpret the meanings in two different senses, so the same word refers to different things. But here in this question, we are talking about a figure of speech or a literary device where we use the same word twice or thrice. आप दो बार भी यूज कर सकते हो, तीन बार भी, चार बार भी, सेम वर्ड, एंड एवरी प्लेस एवरी टाइम द वर्ड चेंजेस इट्स मीनिंग. आपने अगर एक वर्ड यूज किया है दो जगह तो दोनों जगह उसका डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग होगा. जस्ट लाइक हेयर इन द क्वेश्चन इटसेल्फ, साउंड one place and then other sound second place, and then these two places the meaning of the sound changes. वो क्या है? यहाँ पे आवर आर्ग्यूमेंट इज साउंड. साउंड जैसे कहते हैं सब्सटेंशियल, साउंड जजमेंट, सब्सटेंशियल या इंपॉर्टेंट जजमेंट, साउंड साउंड जजमेंट जिसको कहते हैं, या साउंड क्वालिटी. सो हेयर इट इज substantial, important. Our argument is important, bombastic, and nothing but sound. And this sound refers to noise. We have taken two words, means we have taken single words at two different places in two different meanings. एक जगह उस word का meaning है substantial, important, और दूसरी जगह उसका meaning है noise. तो अगर इस तरह का हम यूज करते हैं तो उसको क्या कहते हैं? एंटेनाक्लासिस. एंटेनाक्लासिस इज द यूज ऑफ द सेम वर्ड एट टू डिफरेंट प्लेसेस मीनिंग डिफरेंटली. We can use the word at two different places, three different places in the same sentence, same clause. However, every time this word changes its meaning. एक जगह सीरियस मीनिंग और एक जगह थोड़ा सा डिफरेंट या अनसीरियस मीनिंग हो सकता है. जैसे कि इन दिस सेंटेंस, और भी एग्जांपल्स हैं. इन दिस सेंटेंस आवर आर्ग्यूमेंट सीम्स टू बी साउंड, जस्ट लाइक साउंड जजमेंट. साउंड रिफर्स टू इंपॉर्टेंट जजमेंट और वेटेज. It seems to be full of wisdom or full of importance, or it seems to be full of knowledge. So the judgment seems to be of great importance.
However, when we got to know what this argument is, so it did not turn out to be the same as expected. It referred to only noise. देखने से लग रहा था, कहने से लग रहा था कि बहुत ही जबरदस्त ये आपका आर्गुमेंट है, लेकिन वो क्या था? इट वॉज कंप्लीटली हॉलो, इट रिमेन्ड ओनली नॉइज। वो सिर्फ नॉइज बन के ही रह गया, इट वॉज नथिंग। सो नथिंग, नथिंग बट sound. So here we have taken same word, you have used to different places and then in two different meanings. This is called antenna classes. Adinaton we have already discussed in previous classes. Adinaton क्या होता है? It is a sort of hyperbole. Hyperbole से थोड़ा सा एक extension. It is an extension of hyperbole. In hyperbole, what we say, we exaggerate the things. But that exaggeration to certain extent can be justified and we can digest it. However, in Adinaton, what we do, we exaggerate the things. We means praise the things sometimes, or we describe the things in so impossible a manner that it seems impractical. The example ले लीजिए, जैसे कि when the sky falls we'll catch the larks. हिंदी में उसको कहते हैं कि ना नौमन तेल होगा ना राधा नाचेगी। तो उसमें आप क्या कर रहे हो कि when we had such kind of circumstance, only then we can do. The circumstance and the possibility of the circumstance is nowhere to be in picture. वो ऐसा होने वाला ही नहीं है। जैसे कि when the sky falls will catch the larks. Stars हम कब पकड़ेंगे? कब कैच करेंगे? जब आसमान टूटेगा। ना आसमान टूटेगा, ना ही आप स्टार पकड़ पाओगे। सो यू मेयरली से द थिंग्स फॉर देयर ओन सेक, यू डोंट इंटेंड टू डू। व्हेन द टास्क सीम्स टू बी इम्पॉसिबल, वेरी इम्पॉसिबल, सो उसको क्या कहते हैं? एडिनाटन। थर्ड, epistrophe. Epistrophe is a kind of repetition of the same word, same phrase at the end of the same clause. Means in the successive clauses. जैसे कि आप एनाफोरा देखते हो, तो इन एनाफोरा व्हाट वी डू, वी रिपीट द सेम वर्ड, सेम फ्रेज इन द स्टार्टिंग ऑफ द सक्सेसिव क्लॉजेज और सक्सेसिव सेंटेंसेस। ये प्रीवियस क्लासेस में हमने किया था। इपिस्ट्रोफे में क्या है? वी यूज द सेम, मीन्स वी रिपीट द सेम वर्ड, वी रिपीट द सेम, what we can say in epistrophe, we repeat the same word or same phrase in the ending or at the end of the successive sentences or successive clauses. It is quite opposite to anaphora. Anaphora में सारे words या words जो आप हर line के starting में repeat करते हो, यहाँ पर क्या है? We repeat the word or the phrase at the end of the successive, all the successive lines or clauses. चाहे वो सेंटेंस से 4 हो, 10 हो, या क्लॉजेस 2 हो, 4 हो, उन सब में एंड में आप उसको रिपीट करते हो। उसका एग्जाम्पल भी अभी हम दे देंगे। सो नाउ लेट्स टेक द एग्जाम्पल just like antenna classes. So antenna classes, first of all you should consider the pronunciation of antenna classes. So it is a Greek word. It is a Greek word, so the origin is not to be means overlooked. It is a literary trope. Trope means it is a kind of support or it is kind of device where a single word or phrase is repeated twice or thrice, and then every place it changes its meaning from serious to unserious. So this is what we talk about antenna classes. Just like put out the light, then put out the light. This is from Othello. So he is going to put out the light and then he is also going to put out the light. I mean, the scene is where Othello is going to kill Desdemona. So the act is such, the task is such that he cannot face her in naked daylight or light. So he first of all puts out the light. Light first refers to candlelight. Candlelight or light. And second, light
Second, put out the light refers to lifeline. First, he will extinguish the light and then he will extinguish the lifeline. Means he is going to kill Desdemona. So, same word light is used at two places in two different मीनिंग्स. एक ही वर्ड दो जगह पर दो अलग अलग मीनिंग्स को लेकर के. दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ एंटेना क्लासेस. As other example, we make the traveler's lot a lot easier. Lot a lot. Ek lot, first lot refers to destiny or fortune. And second lot refers to, second is a determiner. First is a noun and second is determiner. A lot easier. Determiner and a lot means substantially. Substantially, to a greater extent. So we are going to change the destiny of the customers substantially is the meaning of this word. So two same word used at two different places in two different meanings. It is an example of antenna classes. Adinaton का भी बताई दिया. When the sky falls, we'll catch the larks. Epistrophe. Epistrophe is the repetition of the same word or words at the end of successive phrases, clauses, or sentences. ये भी बताई दिया. When I was a child, the example is when I was a child. So the repetition of child. I spoke as a child. I understood as a child. I thought as a child. And when I became a man, I put away the childish things. So when I was a child, I thought as a child, and I understood the things as a child, and I thought as a child. So the child or a child is being repeated at the end of all successive lines or successive clauses. This is an example of epistrophe. Now the next question. It is common in irony and lighthearted. It is the use of the word in a sense opposite to its proper meaning. Now we are dealing with a figure of speech where what we say is quite different from what we mean, just like irony. So the question itself suggests that it is found somewhere in between irony and lighthearted. Means we say the things and then we mean something different. What it could be. आयरनी और लाइटोटीज के ये सिनोनिम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझा जाता है जनरली. कई बार अगर एग्जाम्पल आता है तो सिनोनिम इसका आयरनी और लाइटोटीज भी समझा जाता है अगर ये ऐसा क्वेश्चन आए तो. यू शुड रिमेंबर ऑल्सो दिस थिंग. सो हेयर वी टॉक अबाउट this antiphrasis. This is an example of antiphrasis. Antiphrasis is a kind of figure of speech or what we can say literary device where what we say and then what we mean is quite different, just like irony or lighthearted. In lighthearted, what we do, we use two negation in order to undermine the sense of the talk, the sense of the statement. टू नेगेशन से उस स्टेटमेंट की पूरी जो ग्रेविटी है उसको आप अंडरमाइन करते हो. दैट इज लाइटोटीज. हेयर इन आयरनी व्हाट वी डू, वी प्रेजेंट द थिंग्स व्हाट वी मीन एंड व्हाट वी इंटेंड. व्हाट वी से एंड व्हाट वी मीन, व्हाट वी इंटेंड, देयर इज अ डिफरेंस इन बिटवीन. तो उन दोनों में क्या डिफरेंस होता है. द इंटेंडेड मीनिंग इज डिफरेंट फ्रॉम द सैड स्टेटमेंट. सो हेयर इन एंटीफ्रेसिस this refers to the same thing. So the use of the word in a sense opposite to its intended meaning. We'll take the example later on. Other are aposiopesis. Aposiopesis refers to the means when the character goes blank in certain situation. The situation can be caused by some anger or some surprise or some interruption. When the character is emotionally surcharged,
he is completely out of its wits, or he has no control over his emotions. So sometimes he goes blank after starting the statement, starting the sentence, he goes blank. उसको क्या कहते हैं, उस तरह की स्टेट को जो क्या कहते हैं, एपोसियोपिसिस, मीन्स ऑल ऑफ ए सडन यू बिकम साइलेंट। ये जनरली कब होता है, जब आप एंग्री होते हो या आप बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हो, बहुत ज़्यादा सोरोफुल हो, यू आर टू सोरोफुल टू यू आर टू सोरोफुल टू continue with your statement, or you are too angry to continue with your statement. Whenever your emotion of such kind dominates you, एक तो क्या है कि आप पूरे स्टेटमेंट्स तब शो कर पाते हो, पूरे स्टेटमेंट्स का मतलब यही होता है कि आप यू आर इन कंट्रोल ऑफ वॉट एवर यू से और वॉट यू से। इट मीन्स योर रैशनल स्टेट और योर मेंटल स्टेट इज इन कंट्रोल। बट व्हेन यू बिकम angry or rather emotional, you lose the control over your rationality. So what you say may not be completed as such, and when you become silent at the later part of the sentence, so it refers to aposiopesis। इसका एग्जाम्पल भी अभी दे देंगे। इनैप्लेप्स इपैनालेप्सिस भी आपको प्रीवियस क्लासेस में बताया था। इपैनालेप्सिस रिफर्स टू व्हाट वी कैन से repetition of the same word or same phrase at the end of the same clause। ये जैसे एनाफोरा था, एनाफोरा ऑपोजिट है। इपिस्ट्रोफे इसका सिनोनिम माना जा सकता है। तो इपिस्ट्रोफे में क्या कर रहे थे हम, वी रिपीट द सेम वर्ड एट द एंड ऑफ ऑल सक्सेसिव लाइन्स और सक्सेसिव क्लॉजेस। हेयर इपैनालैप्सिस में आप क्या करते हो, in epanelapsis what we do, we repeat the same word or the same phrase at the end of the same clause। वहां पे दूसरी क्लॉजेज में रिपीट हो रहा था, यहां पर सेम क्लॉज में रिपीट हो रहा है। repetition of the same word, same phrase at the end of the same clause, same sentence is an example of epanelapsis। Whereas repetition of the same word or same phrase at the end of all successive lines, successive clauses, वो है आपका epistrophic example। Whenever we repeat the same word or same phrase at the starting of all successive lines, वो क्या है आपका एनाफोरा। तो एनाफोरा, एपिस्ट्रोफे और एपेनालेप्सिस ये सिमिलर है, सिमिलर इन द सेंस वन इज opposite and two are similar। Just like here we can say antiphrasis is the rhetorical device of saying the opposite of what is actually meant in such a way that it is obvious what the true intention is। Just like in irony, what we say and what we intend, the intention is clearly felt to the audience। The audience understand, the spectator understands what he says and what he intends। जो कह रहा है वो ऑपोजिट है, लेकिन उसका मीनिंग हमें पता चल रहा है। सो इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ एंटीफ्रेसिस। जस्ट लाइक टेक योर टाइम, वी हैव गॉट ऑल डे। कई बार हम क्या करते हैं, वी आर इन ए हरी, समटाइम्स वी आर इन ए हरी, सो आउट ऑफ इरिटेशन और आउट ऑफ इम्पेशंस वी सजेस्ट द पर्सन टू हरी अप, बट द पर्सन डज नॉट रिस्पॉन्ड। सामने वाले को कह रहे हैं कि जल्दी करो, लेकिन वो मान नहीं रहा है। तो हम क्या कह रहे हैं, हाँ जल्दी करो, कोई बात नहीं, यू टेक योर टाइम, वी हैव ऑल डे। कोई बात नहीं, टाइम ही टाइम है। द रियलिटी इज वी डोंट हैव एनी टाइम, वी एक्सपेक्ट हिम टू हरी अप, we expect him to finish the thing as soon as possible, but the person does not listen to us, the person does not respond the way we expect him to do। So out of irritation we simply say कि कर ले कोई बात नहीं, ले ले टाइम, पूरा दिन पड़ा है, पूरे अभी तो कई साल पड़े हैं करने के लिए, कर ले। बट वी नो एंड द पर्सन एड्रेस्ड also knows that we are expected to do in a limited time or in as soon as possible। तो वो एग्जाम्पल यहाँ पे आपका हो सकता है। और एग्जाम्पल भी है ये, कम इन टू माई पार्लर सेट द स्पाइडर टू द फ्लाई। अब स्पाइडर फ्लाई से कह रहा है कि भाई कम, I'll host you or I'll welcome you। अब पता है, everyone knows that if the fly goes in the web of spider, so it will be trapped।
लेकिन फिर भी वो यही कह रहा है कि पार्लर, मेरे पार्लर मतलब यू कम टू माई हाउस, आई विल बी योर होस्ट, आई वेलकम यू, आई feed you with so many eatables or edible things. So come. But the intention is the moment you come, I'll consume you yourself. तो जो कह रहा है और जो सिचुएशन है और जो उसका इंटेंडेड मीनिंग है, दे आर क्वाइट डिफरेंट. एंटीफ्रेसिस, टेल मी अबाउट इट इन द सेंस ऑफ डोंट बॉदर, आई ऑलरेडी नो. कई बार क्या होता है कि वी नो एवरीथिंग, बट फिर भी हम कहते हैं हाँ बताओ बताओ, as if we are unaware of this, but we know that we know everything, but the person concerned is bent upon telling the things कि बताओ भाई तुम बता के निपटो already, if even though we know it already. कई बार ये एक्सप्रेशन था ग्रेट when we are angry with the person because he has not done the way we expected, लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं इरिटेशन की वजह से कि बहुत शानदार, बहुत बढ़िया किया तुमने. We know that what he has or she has done is completely devastated, destroyed, disastrous, लेकिन फिर भी हम कहते हैं कि बहुत बढ़िया, बहुत शानदार किया तुमने. तो अब क्या कर सकते हैं? वी आर हेल्पलेस. समटाइम्स वी आर हेल्पलेस. ये बच्चों के साथ जनरली होता है. द चाइल्ड हैज डन समथिंग, means something wrong out of childish nature. So when we don't want to do anything to the child, पीट नहीं सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, तो यही कहते हैं इरिटेशन में कि बहुत शानदार. तो उसको क्या कहते हैं फिर? Antiphrasis. Now take the example of aposiopesis. So it is where we deliberately break off. अब वो कई रीजन हो सकते हैं, वेदर वी आर इमोशनली सरचार्ज और वी आर इंटरप्टेड, we are angry, we are rather sorrowful, means we cannot go on the way we wanted. तो आदि आपकी बात शुरू करके बीच में रुक जाती है. सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ एपोसियोपिसिस. ये अक्सर लिटरेचर में ऐसे एग्जाम्पल्स होते हैं. जैसे कि गेट आउट और एल्स, नॉर्मली हम ये बात करते थे चला जा वरना. अब वरना मतलब वी कुड नॉट कंप्लीट. ये कई बार ऐसी सिचुएशन में फंसते हैं कि जो हम कहना पूरा सेंटेंस कहना चाह रहे थे, सो दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल इन द कंपनी दैट वी आर इन और इन द मीटिंग दैट वी आर इन. सो वी रिस्ट्रिक्ट आवर सेल्व्स, बट आउट ऑफ अग्रेसिव नेचर और आउट ऑफ एंगर और आउट ऑफ पैशनेट इंटेंसिटी वी स्टार्टेड द थिंग. आधा आवेश में आकर के हमने आधा सेंटेंस तो बोल दिया, लेकिन बाद में पता चला कि यार दिस इज नॉट द प्लेस वेयर वी शुड कंटिन्यू दिस थिंग. तो हम उसको बीच में ही छोड़ देते हैं ऐसे. या फिर जब एंग्री है तब उसको बीच में ही छोड़ देते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा सॉरोफुल है तब उसको बीच में से ही छोड़ देते हैं. एनीवे, इन एनी सिचुएशन द एग्जाम्पल कैन बी लाइक दिस. और ये कब ये इलिप्सिस और ये एम डैश या इलिप्सिस से आप इसको शो करते हो. एम डैश इज अ बिगर वन, जो एम के साइज का होता है वो. आई एम सो एंग्री आई कुड well, I could do something disastrous, I could beat you, I could abuse you, I could harm you in this or that way, but I could not go on. मैंने जो बात मेरे इंटेंशन में थी वो मैंने कही नहीं, मैं कह नहीं पाया. आई वॉज इंटरप्टेड और आई वॉज रादर एंग्री हेयर, जस्ट लाइक इन दिस सेंटेंस. आई एम एंग्री, आई वॉज सो एंग्री, आई कुड मीन्स आई कुड ब्रेक हिज हेड, आई कुड डू समथिंग विच ही डिड नॉट एक्सपेक्ट, लेकिन मैंने छोड़ दिया, मतलब जाने दिया, चलो छोड़ो. एंड इन द कंक्लूजन, अब इन द कंक्लूजन मतलब ही वांट्स टू कंप्लीट द सेंटेंस, एंड इन द कंक्लूजन फिर बीच में रुक गया. एंड वेल, इनफ ऑफ दैट, चलो छोड़ी. कि मैं बताऊं एक बात को, चलो छोड़ो यार. तो इसका मतलब क्या है कि आई कुड नॉट कंप्लीट थिंकिंग एनीथिंग, जो मुझे लगा कि या तो वो अप्रोप्रिएट नहीं है उसको, या फिर कोई मतलब नहीं है उसको कंटिन्यू करने का, इसलिए आई लेट इट गो. लेट्स मूव ऑन द अदर पॉइंट. कि चल छोड़ो, अगली बात बताओ यार, कोई फायदा नहीं है. किंग लियर का एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा कॉमन है और बहुत ज़्यादा फेमस भी है, ये एपोसियोपिसिस का. नो यू अननेचुरल हैक्स, आई विल हैव सच रिवेंज अपॉन यू बोथ दैट द ऑल वर्ल्ड शेल. अब यहाँ पे कुछ कहना चाह रहे थे जो कि इस एम डैश से रोक दिया गया.
कि भाई I'll have such revenge on you and then the world will witness that such revenge was so far means so far it was not done by any other person in the entire history. इस तरह की कुछ ना कुछ कंटिन्यू करना चाह रहा था, लेकिन छोड़ो, मैं क्या बताऊं मैं क्या कहना चाह रहा था. आई एम सो एंग्री दैट आई कैन नॉट गो ऑन. आई डू सच थिंग्स, फिर वो कि मैं मतलब करूंगा मैं, आई डू सच थिंग्स बट क्या फायदा, क्या कह करके. What they are yet I know not, but they shall be the terrors of the earth. लेकिन मैं मुझे खुद पता नहीं कि मैं क्या करूंगा. खैर कुछ मतलब आई वुड डू सच थिंग्स दैट यू विल रिमेंबर फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ, और द वर्ल्ड वुड रिमेंबर फॉर द इटर्निटी. लेकिन पता नहीं मैं क्या करूंगा. एनीवे, आई एम नॉट इन माई कंट्रोल. ऐसे ही इपैनल एप्सिस के एग्जाम्पल्स भी यहाँ पे है. द किंग इज डेड, लॉन्ग लिव द किंग. The same word is repeated in the same clause. Epanelapsis epistrophe से इसी तरीके से different है. When we repeat the same word or same phrase at the end of the same clause is epanelapsis. Just like the king is dead, long live the king. The king started this clause and the king ended this clause. History is ours and the people makes history. History starts this sentence and then the history ends its sentence. This sentence. So when we have such kind of situation, it is an example of epanelapsis. Move to the next question. In Shakespeare's Julius Caesar, Antony begins his speech saying, I came to bury Caesar, not to praise him. But he goes on praising Caesar and finally succeeds in inciting the people against the conspirators. The rhetorical device is he is using is. ये एक आयरनी, नॉर्मल आप इसको आयरनी कह सकते हो, बट इट इज नॉट एग्जैक्टली आयरनी. आयरनी का एक एक्सटेंशन है ये, जहां पर आप कहते हो कि भाई मैं ऐसा नहीं करूंगा, बट उसी वीन में उसी कंटिन्यूएशन में आप वही चीज करते चले जाते हो. व्हेन यू डिनाई द थिंग्स डूइंग द थिंग्स, but you do that, we continue to do the same thing. So it is an example of uh, what apophasis. Apophasis refers to a literary device or figure of speech where the character seems to deny the thing that he continues doing. जैसे एंटोनी का एग्जाम्पल. In the starting of his speech, he says that I have come here to bury, means to condemn Caesar, not to praise him. But the rest of the speech is in the praise of Julius Caesar. हमें पता है कि पूरी स्पीच जो थी वो जूलियस सीजर की प्रेज में ही थी. Initially, he denied the praising of Julius Caesar, but the entire speech was in the praise of Julius Caesar. So, when the character says that he won't do the thing, nevertheless, he continues doing the same thing for the length of time. So, this is an example of apophasis. इसको आप आयरनी से कह सकते हो, आयरनी से जोड़ सकते हो. मीन्स मतलब जो कह रहा है और जो कर रहा है, दे आर क्वाइट ऑपोजिट थिंग्स, बट इट इज नॉट एग्जैक्टली आयरनी. तो आयरनी का एक्सटेंशन आप इसको कह लीजिए. एनालिसिस, ये पिछली क्लासेस में आपको बताया था. एनालिसिस रिफर्स टू फ्लैशबैक. फ्लैशबैक मतलब इन द कंटिन्यूएशन ऑफ द स्टोरी, वट एवर हैड हैपेंड इन द पास्ट इज नरेटेड नाउ. एक असुर का एग्जाम्पल दिया था. द स्टोरी ऑफ शुभ इन हिज चाइल्डहुड इज ऑलवेज juxtaposed with the main story, the present day. The past is attached or juxtaposed with present day in order to contextualize the thing. Palinode. Palinode is a kind of retraction. Sometimes we have written a poem and we have said something in the poem. In the next poem we want to make amends. हो सकता है कि हमने कुछ ऐसा कह दिया हो जो नहीं कहना चाहिए था उस पोम में. उस दूसरी पोम में हम क्या कर रहे हैं कि उसको रिफर करके ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि प्लीज इग्नोर व्हाट आई सेड इन द प्रीवियस पोम. जस्ट लाइक इफ वी डू समथिंग, some mistake in the present class, and that is irreparable. It is live class, I have said something which I should not have said, and once it is live it cannot be brought back.
तो मैं क्या करूँगा इसको, आई वुड ट्राई टू मेक अमेंड्स इन द नेक्स्ट क्लास। अब नेक्स्ट क्लास में मैं क्या करूँगा, पिछली क्लास का मतलब आज का रेफरेंस दे करके कि यार इन द प्रीवियस क्लास आई सेड दिस थिंग, सो प्लीज डोंट टेक दिस इन दैट मीनिंग, प्लीज इग्नोर दिस, आई डिड नॉट मीन दिस। तो ये क्या रिट्रैक्शन हुआ, एक तरह का रिट्रैक्शन। मैंने अपनी ही कही हुई बात को थोड़ा सा मॉडिफाई करने की कोशिश की है, उसको जस्टिफाई करने की कोशिश की है, उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, विद द फियर दैट इट माइट हैव बीन नॉट एक्सेप्टेबल, और इट माइट हैव बीन समवॉट not justified. So whenever the writer, the poet says something like this, वो क्या है, उसको कहते हैं पैलिनोड। पैलिनोड का एग्जाम्पल सबसे बढ़िया जॉफ्री चौसर के यहाँ मिलेगा, जो प्रोलोग में लास्ट में वो कह रहे हैं, जो पिछला मतलब वट एवर ही हैड सेड इन द प्रीवियस वर्क्स, ही वॉन्ट्स टू मेक इट वेरी क्लियर इन द प्रोलोग। तो वो एग्जाम्पल यहाँ पर है भी, आप यू कैन रिफर टू द रिट्रैक्शन ऑफ जॉफ्री चौसर। सो ये एपोफेसिस एंड एनालेप्सिस इन पैलिनोड। पैलिनोड के एग्जाम्पल अभी आपके सामने आ भी जाएंगे। एपोफेसिस, एपोफेसिस एंशिएंट, इट इज अ ग्रीक टर्म। सो अगर आप उसके बारे में और इंफॉर्मेशन चाहिए, इट इज अ ग्रीक टर्म टू से नो। समटाइम्स द लिटरल मीनिंग इज आस्क्ड, आपको ग्रीक वर्ड एग्जाम में दे दिया गया और उसका लिटरल मीनिंग आपसे पूछा जा रहा है, मतलब इंग्लिश मीनिंग उसका पूछा जा रहा है, और वो हो सकता है जो उसका रेफरेंस है या उसका जो डेफिनेशन है, डेफिनेशन और लिटरल मीनिंग में नॉट समटाइम्स करस्पॉन्ड। हो सकता है कि लिटरल मीनिंग उस कुछ और है उस वर्ड का, और जो डेफिनेशन है जिस कॉन्सेप्ट के लिए उसको एस्क्राइब किया हुआ है वो कुछ और है। दिस इज ऑल्सो पॉसिबिलिटी। तो हम क्या करते हैं, डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से या डेफिनेशन को बेस बना करके उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं, बट द रियलिटी इज दैट literal meaning may differ from the definition, so we are expected to know both the literal meaning and the definition. अगर वो दोनों मैच करते हैं that is okay, if they don't match, so we are expected to learn them separately, just like say no. So apophasis is to say no. It is a rhetorical device wherein a speaker or writer brings up a subject by either denying that it should be brought up. जो अभी example दिया एंटोनियो एंटोनी का, मार्कस एंटोनी का, that he starts his speech by saying that he has not come here to praise appreciate Julius Caesar. He denies appreciating Caesar, but the appreciation is the only thing that he does. पूरी स्पीच में appreciation ही किया है। ये एक और एग्जाम्पल भी है इसका यहाँ पे। Sir, the eulogies are now written. The commendations are already elaborated. I don't say everything fulsome, but everything panegyrical has already been written out with blanks for names. अब पहले तो वो डिनाई कर रहा कि भाई everything has been written. The eulogies are now written. The commendations are already elaborated. जो भी जिसकी भी तारीफ करनी थी या वॉट एवर ही हैड टू हु सो एवर ही हैड टू क्रिटिसाइज, वो सब कर लिया है। आई डोंट से एवरीथिंग फुलसम, लेकिन अब वो कह रहा है कि भाई आई डोंट से दैट इट हैज बीन कंप्लीटली सेड। मैंने क्या किया है उसको, आई हैव रिटन इट विद ब्लैंक्स फॉर नेम्स, बस नाम भरने की देर है, मतलब सब कुछ कर दिया है, ऑलरेडी सब कुछ कर दिया है, विच ही डिनाइज राइट नाउ। ओनली द थिंग दैट रिमेन्स इज द फिलिंग ऑफ द नेम्स इन द ब्लैंक्स। तो सब चीज ऑलरेडी कर दी, फिर भी यहाँ पे वो उसको डिनाई कर रहा है। टू बी फिल्ड व्हेन द कन्वेंशन शैल एडजॉर्न, और मैं नाम लिख दूंगा जब पूरी मीटिंग कंप्लीट हो जाएगी, तो मैं नाम लिख दूंगा, मतलब दिस इज ऑलरेडी इन माय माइंड व्हाट आई हैव टू से, व्हाट आई हैड टू से, एंड विच पीपल आई हैड टू मेंशन, वो सब के मेरे माइंड में थे, लेकिन अभी मैं डिनाई कर रहा हूँ। ये बड़ी फेमस स्पीच है। He then quotes and attempts to quote from my speech. I'll not say that he willfully misquotes, but he does not fail to quote accurately. Deny भी कर रहा है और कह भी दिया, ये कह भी दिया कि he willfully misquotes, but he does fail to quote accurately. एक तरफ willfully quote misquote कर रहा है और एक तरफ कह रहा है कि वो
he actually fails to quote accurately. मतलब it is his habit, or he could not help quoting in a real sense, quoting in accurate sense. पहली नोट देखिए, Palinode or palinody is an ode in which an author expresses an opinion opposite to that which they have included in another earlier poem. In one poem, I have expressed my opinion like this. Perhaps if I have composed a poem and in the poem I have said something about the politics, I have expressed my views on politics in negative terms. But now I realize that once the poem is published, it has gone in the public. The people may have some misconception about my political ideology. They may misjudge me. They may become judgmental about my personality. So what I do in the next poem, I refer to the this opinion of the previous poem, एंड आई ट्राई टू डिफेंड इट कि भैया पहले जो पिछली पोम में जो मैंने लिखा था या कहा था, यू शुड नॉट कंसीडर इट एज माई ओपिनियन, आई डू नॉट ओपाइन दिस वे, जो मेरे वो ओपिनियंस नहीं थे. सो मैं क्या कर रहा हूँ, आई एम मेकिंग अमेंड्स. मैं दूसरी जो नेक्स्ट पोम है उसमें पिछला जो भी कहा था उसको डिफेंड करने की कोशिश मैं नेक्स्ट पोम में कर रहा हूँ. सो दिस इज अ काइंड ऑफ पैलिनोट. जैसे रिट्रैक्शन का एग्जाम्पल है यहाँ पे, ये जॉफ्री चौसर का. रिट्रैक्शन के नाम से ये फेमस है. बाय चौसर इज ये एग्जाम्पल में आ सकता है. रिट्रैक्शन, द रिट्रैक्शन ऑफ चौसर रिफर्स टू व्हाट, सो इट रिफर्स टू पैलिनोड. या रिट्रैक्शन ऑफ चौसर रिफर्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स ऑफ स्पीच, वो किसका एग्जाम्पल है, पैलिनोड का. या रिट्रैक्शन ऑफ जॉफ्री चौसर इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स ऑफ स्पीच, सो द आंसर इज पैलिनोड. सो दैट द फाउंड, ये इन्होंने क्या किया है, पैलिनोड दैट्स फाउंड एट द एंड ऑफ कैंटरबरी टेल्स. इट वाज penned as an apology asking that readers forgive him for the vulgar and darker parts of his past works. ये एक तरीके से एक तरह की apology है that अभी तक जो चौसर ने जॉफ्री चौसर ने पिछले वर्क्स में लिखा था, हो सकता है इन सर्टेन वे ही रोट समथिंग स्कैंडलस, he wrote something vulgar, he wrote something in wrong vein, he misjudged the things, and as such he went means he got carried away, he could not control his emotions, and as such he expressed himself in negative way. Now since this poem is very famous one, so through this poem he wants to make amends कि भैया पिछली बार या पिछले वर्क्स में जो भी मैंने कहा था, प्लीज इग्नोर दैट, आई डिड नॉट मीन दैट, आई डिड नॉट इंटेंड दैट, दिस वाज डन मीन्स अननोइंगली और इन नॉट माई पर्टिकुलर इंटेंशन. तो मैं उसके लिए अभी यहाँ पे अपॉलॉजी सीख कर रहा हूँ. प्लीज फॉरगिव मी फॉर व्हाट आई हैव डन इन माय प्रीवियस वर्क्स. सो दिस इज पैलिनोड. पैलिनोड एक और भी है, ये छोटी सी पोम, इससे भी आपको एग्जाम्पल मिल जाएगा. दिस इज द पोम एंड द रिजॉइंडर. एक पहले पोम लिखी छोटी सी, उसके बाद में दोबारा से उसको रिफर किया गया. जैसे कि ये आई नेवर सॉ अ पर्पल काउ, मतलब द प्रीवियस पोम इज अबाउट पर्पल काउ. आई नेवर होप टू सी वन, आई नेवर सॉ द पर्पल काउ, आई डोंट वांट टू सी purple cow, or I don't have any hope of meeting purple cow. But all I can say, I can tell you anyhow, I would rather see than be one. लेकिन फिर भी मैं चाहूंगा कि मैं कहूं, मतलब he has said something about purple cow. अब इसको लग रहा होगा कि यार इन दिस पोम आई हैव सेड सम नेगेटिविटी, सेड समथिंग नेगेटिव अबाउट पर्पल काउ, और about my liking for purple cow, about my meeting purple cow. So he wants to make amend in the next poem, या फिर उसको रिफर करते हुए, जैसे कि later in his life he followed it with this palinode. Yes, I wrote the purple cow and I'm sorry now I wrote it. कि भाई मतलब I should not have written the poem purple cow.
That was not expected, and by me, by anybody. After composing the poem and publishing the poem, I realized that it was a mistake. So now I want to make amends. So I'm sorry now I wrote it, but I can tell you anyhow, I'll kill you if you quote it. So I'll kill you, matlab, he wants to warn the readers to not to quote it because he is very ashamed of composing this poem. ऐसा समझ लीजिए. If the writer is ashamed of quoting, or if the writer is ashamed of saying something in the poem or in a write up, which he regrets later on. So, what he writes in the next composition, so he seeks apology. So, that apology can be a kind of palinode. वो भी एक एग्जाम्पल पैनिनोड का हो सकता है. आपने पहली पोम में कुछ कहा जिसको कि आपके पछतावा हो रहा है, नाउ यू वांट टू मेक अमेंड इन द नेक्स्ट पोम. सो क्लैरिफाई करना या फिर अपॉलॉजी सीख करना नेक्स्ट वर्क में पिछले काम के लिए अपने, वो किसका एग्जाम्पल है, पैलिनोड का. तो यहाँ पर ही वांट्स टू मेक अमेंड व्हाट ही सेड इन द प्रीवियस पोम. नेक्स्ट क्वेश्चन इज a number of writing related to those in the scriptures but not admitted into the authoritative canon. Sometimes what happens, particularly in the scriptural point of view, religious texts point of view, कुछ टेक्स्ट ऐसे हैं जो कि पब्लिक में तो हैं बट अथॉरिटेटिव उनको किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया है, या दे आर नॉट एस्क्राइब्ड टू एनी राइटर. कई बार क्या होता है कि चीज़ें हैं स्कैंडलस है, रिलीजियस है लेकिन वो स्कैंडलस है, या फिर टू सर्टेन एक्सटेंट वो रेडिकल है. रिलीजियस टेक्स्ट है लेकिन रेडिकल है, रिलीजियस टेक्स्ट है लेकिन वो स्कैंडलस है. रिलीजियस टेक्स्ट है, और रिलीजियस टेक्स्ट का मतलब क्या है कि पब्लिक हैव सेंटिमेंट्स अटैच्ड टू दैट पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट, एंड देन दैट पर्टिकुलर लिटरेरी टेक्स्ट और रिलीजियस टेक्स्ट कंडेम्स इट. आपकी किसी पे फेथ है और उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को एक बुक में रिडिक्यूल किया हुआ है, नेवरदलेस इट इज आल्सो रिलीजियस टेक्स्ट. सो इट मे बिकम scandalous, it may become very argumentative, and it may become controversial. And then the writer who has composed it may become means the target of the anger of the people. तो वो क्या होता है, उसको आप रिलीजियस कैनन जो होती है वहां से उसको बायकॉट कर देते हैं, और उस ये जो पर्सन है, पर्सन भी अपना नाम उसमें रिवील नहीं करना चाहता. सो वी नो द टेक्स्ट, वी हैव द टेक्स्ट, बट वी डोंट नो द ऑथर. सो इट इज अबाउट द डाउटफुल ऑथरशिप. एक एक सिंगल लाइन में या फिर वन लाइनर एक्सप्लेनेशन में आप क्या कह सकते हो, इट इज द एग्जाम द आंसर इज अपोक्रिफा. सो अपोक्रिफा इज refers to apocrypha refers to doubtful authorship, particularly for scriptural writings, which are known to the world, which may be scandalous or controversial, and as such, the author's name is not revealed or particularly hidden. या तो वो रिवील नहीं किया ऑथर ने, या फिर उसको जानबूझ करके हटाया गया है, so that people may not know about the writer and the writer escapes the punishment or the aggression of the people. So that the text is there but it is not the accepted canon of religious scriptures. इसको कहते हैं apocrypha. So apocryphal writing भी किसको कहते हैं, doubtful authorship. जिन राइटिंग्स का कोई ऑथर पता नहीं होता और वो किसी को भी एस्क्राइब कर दी जाती हैं. बहुत सारे टेक्स्ट शेक्सपियर को एस्क्राइब किए हुए हैं बिकॉज the style of Shakespeare is similar to the style of that works, and then the writing does not have any known authorship. जो भी पोम है या फिर जो ड्रामा है उसका स्टाइल शेक्सपियर के स्टाइल से मैच करता है, लेकिन उस राइटिंग का कोई अता पता नहीं कि किसने लिखी है. सो इट इज ascribed टू शेक्सपियर, एंड समटाइम्स इट रिमेन्स एनोनिमस. एनोनिमस क्या होती है, यहाँ पे एक वर्ड है एनोनिमस. एनोनिमस हुज ऑथर इज नॉट नोन. एक होता है डाउटफुल ऑथरशिप और एक होता है एनोनिमस. एनोनिमस इज कंप्लीटली द ऑथरशिप विदाउट एनी आइडेंटिटी. बुक तो है आपके सामने, टेक्स्ट तो है, बट यू डोंट नो हु कंपोज्ड इट. और एक क्या है एपोक्रिफल. एपोक्रिफल में क्या है कि यू नो
You have the text, but you are doubtful as to whether this writer composed it or that writer composed it. तो फिर आप क्या करते हो, उसके टेक्स्ट को बाकी टेक्स्ट से मैच कराते हो, स्टाइल को मैच कराते हो, टर्मिनोलॉजी को मैच कराते हो, और जो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है उस राइटर की, जो स्टाइल से रिलेटेड है, उससे मैच कराते हो. इफ इट मैचेस टू सर्टेन ऑथर इट इज एस्क्राइब्ड, जैसे शेक्सपियर का एग्जांपल मैंने अभी दिया. So apocrypha refers to any scriptural writing which is excluded from the canon. Canon क्या होता है? Authoritative, जो एक establishment होता है. मतलब people proudly say that this particular text belongs to our mythology. लेकिन वो टेक्स्ट उसी मिथोलॉजी से रिलेटेड है, लेकिन कोई उसकी ऑथरशिप को क्लेम नहीं कर रहा, बिकॉज इट मे हैव सम कंट्रोवर्शियल और सम स्कैंडलस थिंग. ये भी हो सकता है. दिस इज वन ऑफ द रीजंस व्हाई पीपल एक्सक्लूड दिस फ्रॉम द अथॉरिटेटिव कैनन. तो वो किस क्या एग्जाम्पल है? एपोक्रिफा. एनाकोलेथ्यून, ये आपको पहले उसमें बताया भी था. और पोस्थ्यूमस, पोस्थ्यूमस राइटिंग क्या होती है? दैट इज मींस पब्लिश, दैट पब्लिशेस एनी पीस ऑफ राइटिंग दैट पब्लिशेस आफ्टर द डेथ ऑफ ऑथर. ऑथर के बाद में, ऑथर के मरने के बाद में अगर कुछ पब्लिश होता है, सो दैट इज पोस्थ्यूमस. पोस्थ्यूमस, एनोनिमस एंड एपोक्रिफा. एपोक्रिफल, ये एपोक्रिफा इज अ नाउन, और इसका एडजेक्टिव, जैसे पोस्थ्यूमस, एनोनिमस, दे आर एडजेक्टिव्स, और इसका एडजेक्टिव जो है वो क्या है? apocryphal. Apocryphal writing. Here you can have additional example. So apocrypha from Greek apokryptein, to hide away. Its literal meaning is to hide away. Means we want to hide the identity of the author who seems to have composed it. बिकॉज ऑफ सम रीजंस. वो रीजंस कुछ भी हो सकते हैं, चाहे वो स्कैंडलस होने का रीजन हो, चाहे वो कंट्रोवर्शियल होने का हो, या फिर वी डोंट नो एग्जैक्टली, द पीपल डोंट नो हु कंपोज्ड इट. अगर कुछ स्कैंडलस नहीं है, कुछ अगर कंट्रोवर्शियल भी नहीं है, बट द टेक्स्ट इज देयर, बट वी डोंट नो एग्जैक्टली हु कंपोज्ड इट, तो वो जो इस्टेब्लिश्ड कैनन है उससे एक्सक्लूड किया जाता है. पहले तो उसको हटाया जाता है, एक्सक्लूड किया जाता है, फिर कंप्लीटली उसको, मतलब ये कह दिया जाता है दिस टेक्स्ट डज नॉट बिलोंग टू दिस मिथोलॉजी, दिस रिलीजन. तो डाउटफुल ऑथरशिप के लिए ही है. बिब्लिकल लिटरेचर में एपोक्रिफा का जब भी आएगा, वो रिलीजियस या बिब्लिकल लिटरेचर के कॉन्टेक्स्ट में ही आ जाता है. वर्क्स आउटसाइड एन एक्सेप्टेड कैनन ऑफ स्क्रिप्चर्स, मतलब ऐसे वर्क्स जिनको कि स्क्रिप्चर नहीं माना गया है, ऐसे वर्क्स उनको कहते हैं एपोक्रिफा. हालांकि है वो वैसे ही, इट इज अबाउट रिलीजन, इट इज अबाउट रिलीजियस कॉन्सेप्ट, बट इट हैज नॉट बीन एक्सेप्टेड एज स्क्रिप्चर्स बिकॉज ऑफ मैनी रीजन. जो रीजन मैंने अभी बताए वो हो सकते हैं. इट मे बी स्कैंडलस, इट मे बी कॉन्ट्रोवर्शियल, और एज सच द रिलीजियस अथॉरिटी wanted to exclude it from the mainstream religious literature. जैसे कि अगर हिस्ट्री आप देखते हो इसको, द हिस्ट्री ऑफ द टर्म्स यूसेज इंडिकेट्स दैट इट रिफर्स टू द बॉडी ऑफ esoteric writings that were at first prized, later tolerated and finally excluded. मतलब कई बार क्या है कि पहले तो आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन व्हेन यू रियलाइज दैट दिस कुड प्रूव टू बी फैटल, दिस कुड प्रूव टू बी डेंजरस टू द कॉन्सेप्ट ऑफ रिलीजियस आइडियोलॉजी दैट वी आर प्रोपेगेटिंग, तो आपने क्या किया? उससे साइडलाइन करना अपने आप को शुरू कर दिया, उस टेक्स्ट से अपना किनारा करना शुरू कर दिया, और लास्ट में उसको ये कह दिया कि दिस टेक्स्ट डज नॉट बिलोंग टू दिस लिटरेरी और रिलीजियस लिटरेरी कैनन. और उसकी फिर ऑथरशिप रिवील नहीं की जानबूझ करके, या फिर यू डिड नॉट नो हु कंपोज्ड इट. कोई भी रीजन इसके हो सकते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? एपोक्रिफा. इन क्रिश्चियनिटी द वर्ड एपोक्रिफल was the first applied to the writings which were to be read privately rather than the public context of the church services.
ये भी एक रीजन ये भी हो सकता है, दिस apocryphal writing or apocrypha particularly may be the writings which were hidden from the public view and which were read in Christianity or in churches privately, not in the public domain. तो शायद उनमें कुछ ऐसा था, ऐसी कॉन्सेप्ट्स थी जो कि बाकी जो मेन कॉन्सेप्ट जिसको प्रोपेगेट किया जा रहा है उससे मैच नहीं करते, या फिर अगर मैच कराए जाएंगे तो पीपल विल लूज फेथ। तो कुछ भी रीजंस हो सकते हैं उसके। So this is all we had today. We'll again means continue these classes. If you have any questions, you may ask, or you may send your questions later on. We'll take those questions. Anyway, thank you so much. Thank you for joining this class.